in independent India is represented, majority is Hindus in parliament, what percentage of the representation minorities have in the parliament? Okay, so just like that time, we as a Hindu not accepting British efforts, how do you accept that the Muslims, when they are not represented, not even in proportion of their population, will be accepting Hindus reforming their customs and traditions? Okay. Now, the next thing is, Uniform Civil Code actually means what? Uniform Civil Code is linked with secularism in the sense that how people will lead their life. This is also linked to the concept of sovereignty of the state. Okay? So in medieval time, there was a problem of church and king. So life will be governed by the laws made by the church or the state. So European development is what? Where they decided that the laws will be made by state. Okay? And this became the definition of their secular state. So basically, state make law will have supremacy even in matters of customs and tradition. ये western concept of secularism है. Those who are political science students, they must be knowing, मतलब जैसे Hobbes एक thinker है, उसने क्या कहा? Church is also under the state. So church can interfere, state can interfere in the matters of church. तो ये western concept है. Again, uniform does not mean one code for all. ठीक है? Uniform civil code issue is whether a state has a right to interfere in the customs and traditions and the religious laws. It is not about nationalism. It is about a state recognizing whether the church is different, separate, untouchable, or a state can interfere and change the customs and traditions. तो ये issue उससे linked है. If you see Article 25 Clause 2 Sub Clause A of Indian Constitution, it allows the state to, even if it is a uniform civil code not there, but it allows a state can interfere in the secular administrative matters. So there is no prohibition on Indian state from not interfering in the customs and traditions of minorities. And it is not that Indian state does not interfere. Indian state does interfere. Indian state has interfered, whether it is a legislature or it is judiciary. So there is a Muslim woman protection of rights on Divorce Act. Okay, so this renewed debate of uniform civil code started with the famous Shah Bano case, where Supreme Court has expressed its disappointment that the government has not done to go ahead with implementation of the uniform civil code or reforming the laws governing the Muslim section of the society. Now regarding Muslims, it's not that the law is not there, law exists. Okay? Regarding Muslims, there is Muslim personal laws,
Shariat Application Act 1937 exists, which prohibits a state from interfering in the customs and tradition. But ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है. और आर्टिकल 13 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ will survive only if it is not in contradiction with the present law. तो 1937 एक्ट गवर्नमेंट फॉलो करे या नहीं करे, ये गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है. दिस ऑल्सो डज नॉट प्रोहिबिट, ठीक है. तो इंडिया में स्टिल, और वॉट यू कैन नॉट से दैट द मुस्लिम्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन लॉ. रियलिटी ऐसा है नहीं. नाउ द थिंग इज Muslim laws and Hindu laws. Indian state has reformed Hindu laws. Now even the Sikhs have their own separate laws. Christian and Parsis laws already reformed. Among Hindus, Jains, Buddhists and all are clubbed. Okay, so the only community that remains outside is Muslims community. But it is not completely outside. As and when the need arose, the government had intervened. चाहे वो शाह बानो केस हो, डेनियल लतीफ़ी केस हो या ट्रिपल तलाक केस हो. And when judiciary has said triple talaq is neither constitutionally tenable nor it is an integral practice of Islam. So it's not that state is not intervening. And this uniform civil code issue is like a state having power to amend the laws. And what happens, why it start looking like uniform? It start looking like uniform because any state in India, any government in India can make law only which is as per the constitution. So directly or indirectly that law appears to be uniform because of the constitutional values. Okay. Now uniform civil code, because between Muslims and Hindus, in certain aspects Muslim laws are anyway more advanced than Hindu laws. There was a need for Hindu laws to be reformed because the situation of women was much, or you can say worse, and at that point of time the need was not there because Muslim laws were already advanced. ठीक है? तो just for the sake of the satisfaction of certain sections of the society, if something is already fine, why do you want to reform? Nothing is perfect. So those certain areas where reform is done, that is anyway being in the process of. Okay. So this debate needs to be depoliticized, because when it gets politicized, the women issue gets sidelined. Women themselves get confused and divided, and nationalism and secularism and all these issues come up. ठीक है? If you see, compare Muslim laws and Hindu laws. अब Muslim laws एक और भी reason है why people want to change, because Hindus में you are allowed only one marriage और Muslims can do 4 marriage. तो जो हिंदू men हैं, ठीक है, तो उनको एक ये भी खुंदक है कि भाई हमारी दूसरी शादी नहीं हो सकती. Is this clear?
अब दूसरी चीज क्या है, इन अमंग हिंदूज सेकेंड वाइफ अप टिल नाउ हैड नो लीगल स्टेटस, अप टिल नाउ नो प्रोटेक्शन, बट अमंग मुस्लिम्स if 4 wives then all wife have equal status, जो अब सुप्रीम कोर्ट चेंज कर रहा है इन केस ऑफ हिंदूज। तो अगर कोई चीज पहले से बेटर ही है तो उसको क्या रिफॉर्म करना है, उसको रिफॉर्म करके जो पहले से खराब है उसके लेवल पे लाना है। तो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि क्या चीज रिफॉर्म करना चाहते हो और कितना रिफॉर्म करना चाहते हो। कंप्लीट रिफॉर्म, अब कंप्लीट रिफॉर्म इज इट रियली नीडेड, एंड just because you make or state make laws, does the status of women improves automatically? Hindus में तो है state made law. Is the situation of women improved in Hindus? And then there are a lot of discourses, because despite poverty the sex ratio is better among Muslims, though you say that the laws are backward. Have you understood this? So how politicized the entire debate is, and what exactly is uniform civil code? Uniform civil code का basic मतलब ये है state getting power to make changes in the personal laws. अब state can amend personal laws, ये तो वैसे भी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है और चीज़ें हो ही रही हैं, तो इस डिबेट का कुछ बेसिस ही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली सुप्रीम कोर्ट इन शाह बानो केस, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन सुप्रीम कोर्ट रियलाइज्ड दैट इज नॉट नीडेड। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट evaluating a particular practice. If it is not in accordance to the constitutional principles or human dignity, they are changing. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म था उसको टोन डाउन किया। इवन इन ट्रिपल तलाक केस सुप्रीम कोर्ट डिडंट आस्क that government should go and form the uniform civil code, but government itself has referred the matter to the law commission. Ab law commission's report was about to come, but again Supreme Court has accepted a petition for uniform civil code. तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर से, सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रोच इज फ्लक्चुएटिंग. So sometimes they direct the government, then it becomes judicial activism. Sometimes they act with restraint. So abhi the matter has become sub judice. Now because the matter has become sub judice, the law commission report cannot be, or law commission has said that if matter is sub judice, they will not give the report. ठीक है, you have understood this. तो बेसिकली दिस इज द इशू इन यूनिफॉर्म सिविल कोड. और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट इन इंडिया डज नॉट इंटरफियर इन द लॉ. और जैसे शाह बानो केस के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन इन राइट्स एक्ट आया. दैट इटसेल्फ इज अ व्हाट, दैट इटसेल्फ गिव्स राइट्स टू मुस्लिम वुमेन. उसके बाद जुडिशरी ने उसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट भी कर दिया है. तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नीड नहीं अराइज होता. बट अमंग मुस्लिम्स देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस विच द मुस्लिम वुमेन, जैसे इन्होंने पिटिशन किया रिगार्डिंग 2-3 प्रैक्टिसेस. ट्रिपल तलाक का तो जजमेंट आ चुका है, 2 प्रैक्टिसेस और हैं. एक है पॉलीगैमी, दूसरा है निकाह हलाला. तो दिस दे से इट गोज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, तो इसके मतलब लॉट ऑफ क्लाउड्स हैव टू बी क्लियर्ड इन दिस
पर्टिकुलर डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो तुम लोगों ने ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा है क्या? नो इसमें एक क्वेश्चन लिखो, राइट, लिखो, राइट, एग्जामिन द डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड in context of the issue of gender justice with respect to Muslim women, gender justice with respect to Muslim women। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखो। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, इट इज ऑल्सो अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, राइट, इन यूरोप राइट nations have adopted the concept of universal citizenship, comma, which also led to the adoption of uniform civil code right, the guiding theme was the protection of minorities, and to protect them from any sort of discrimination। ठीक है, discrimination, right? State will adopt the principle of religious neutrality, comma, religion of a citizen will not be a criteria for the state। तो अब इस वहाँ पे यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट और स्टेट स्मॉलर स्टेट्स हैं। अब इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो वहाँ की अपनी हिस्ट्री थी, रिलीजियस वॉर्स वेयर गोइंग ऑन, नेशन स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड, तो माइनॉरिटीज इन एवरी स्टेट सम माइनॉरिटीज रिमेन्ड। तो ये डिसाइड हुआ कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी एज अ प्रिंसिपल होगा और स्टेट के लिए रिलीजन विल नॉट बी अ कंसिडरेशन। तो सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट्स। हालांकि इवन आज के टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इट एडिक्वेट इवन फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज टुडे, बिकॉज सिचुएशंस हैव चेंज्ड। तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी अभी तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अडॉप्ट करनी चाहिए रादर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड।
तो इंडिया फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज इंडिया शुड बी कंपेयर्ड विथ यूरोप, नॉट विथ फ्रांस. And something which is not proving relevant for France, and France itself has to change. Why do you want to put that redundant concept in Indian context now? ये समझ में आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब लिखो, राइट, द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड gets linked with first, idea of secularism. Second, idea of nationalism. So what is important is your nation, not religion, and all will be following one religion. ये तो यूरोपियन कंसेप्ट है. Is this clear? तो राइट, इन प्रैक्टिस यूनिफॉर्म सिविल कोड implies state getting rights to intervene in the religious practices, customs and traditions. ठीक है? तो बेसिकली स्टेट इंटरवीनिंग, एंड इट इज लाइक स्टेट मेकिंग पर्सनल लॉज, स्टेट मेकिंग रिलीजियस लॉज. ठीक है? अब लिखो, वाई इट अपीयर यूनिफॉर्म. हाँ, और अपना यूनिटी डाइवर्सिटी है. अब लिखो, वाई इट अपीयर्स यूनिफॉर्म. राइट, सिंस state has to make law according to the constitution. ठीक है? comma, whenever a state will make law for any community comma, it has to be aligned with the values of constitution. ठीक है? Right, hence they start appearing uniform. Or overlapping. ये बात समझ में आ गई? क्रक्स क्या है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट का? क्रक्स क्या है? इंडियन स्टेट कैन इट इंटरफियर इन the customs and traditions of Muslims and change it or not? और अगर इंडियन स्टेट चेंज करती है और इंडियन लॉ बनते हैं तो स्टेट कौन सा लॉ बना सकती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, तो अगर स्टेट किसी के लिए भी लॉ बनाएगी तो वो इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी लगती है या वो ओवरलैपिंग लॉज लगते हैं. तो पूरी डिबेट का इशू है वेदर व्हेन स्टेट हैड मेड लॉज फॉर अदर कम्युनिटीज, व्हाई लेफ्ट फॉर मुस्लिम्स. इज दिस क्लियर? कैन इंडियन स्टेट मेक लॉ फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो और नॉट? क्रक्स ऑफ द डिबेट ये चीज़ है.
ठीक है, अब लिखो व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इंडिया, व्हाट आर द इश्यूज of debate in Indian context. What are the issues of debate in Indian context? First है gender justice. Second, secularism. Third, nationalism. ठीक है, right. However, the most important concern is gender justice or the rights of Muslim women. राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, ये मेन इशू है, बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। अब लिखो व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, राइट, a highly divisive issue. It was a highly divisive issue. Divisive, division था, divisive issue. Right. Women leaders like Hansa Mehta, राजकुमारी अमृत कौर, modernists, modern like Nehru and Ambedkar, preferred यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, and some leaders from minorities were against. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो what is the provision in the constitution, what is the provision in the constitution. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट, स्टेट शैल endeavor, ENDEAVOUR, endeavor to secure for the citizens comma a uniform civil code throughout the territory of India. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो shall endeavor, shall endeavor means shall take special efforts, it
it will take or it shall take special efforts. ठीक है, अब लिखो why. right, because of partition comma there was a lack of trust and hence it was not conducive comma to introduce uniform civil code rather it was expected that government will work in such a way that the trust develops between the two communities. ठीक है, अब लिखो व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन. मतलब एनवायरनमेंट इस तरीके का हो जाए कि लोग अपोज ही नहीं करें. ट्रस्ट होना चाहिए ना, नेशन है तो एक दूसरे में ट्रस्ट होना चाहिए. तो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में ट्रस्ट हो, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में, तब जाके नेशन बनता है ना. तो वो है कहाँ. ठीक है, तो अब व्हाट इज द present scenario. So right, there has been growth of distrust rather than trust. So if India is to become a modern rational country, there is nothing wrong, you can have uniform civil code, but there are some necessary requirements. Rather the situation has gone worse than what is existing in the initial decades. So the thing is, environment is not conducive to introduce uniform civil code. Is this clear? Now the question is, likho right, likho whether a state in India can intervene in the personal laws of minorities or not. Because why this question? Why this question? Point number 1, uniform civil code is a directive, comma, a non-enforceable part of the Constitution. Second point, Article 25, Clause 1, right, it gives all persons freedom of conscience, comma, practice, conscience या conscience, CONSCIENC, conscience, comma, practice, profess and propagate religion. फिलहाल अभी अपना काम केवल है
फ्रीडम टू प्रैक्टिस, अंडरलाइन करो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पे लिखो, राइट, customs and traditions are part of freedom to practice religion. And it is a fundamental right. ठीक है, अब लिखो इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये सब जब लड़ाई झगड़ा डिबेट शिबेट करते हैं, पूरी बात कभी बताते नहीं, ठीक है, और सारा पॉलिटिकल क्लास सारी बात नहीं बताता है, और लोग भी कभी कोशिश नहीं करते जानने की कि असली बात क्या है। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस रिलीजन तो है, लेकिन इट इज़ नॉट an absolute right. It is subjected to certain restrictions, public order, decency, morality. अब ये सारी चीज़ें वेग टर्म्स है ना, तो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, मोरालिटी का लिंक है ह्यूमन डिग्निटी से, तो स्टेट फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ना सर्टेन प्रैक्टिसेस। Certain practices, for example, nikah halala or triple talaq, if or even polygamy, if it appears that it is against human dignity, Constitution does not prohibit. ये समझ में आया? अब इसमें लिखो explanation, right? Point number 1. फिर लिखो Article 25 Clause 1. Right, freedom to practice religion is not absolute. Right, it is subjected to following restrictions. First, public order. Second, morality. Third, health. ठीक है, मान लो ट्रिपल तलाक से किसी की हेल्थ ही खराब हो जाए, हाँ? ठीक है, कोई बीमार साइकोलॉजिकल पड़ गया, एनीवे, public order, morality, but it is a social health, morality, health, and चौथा भी है, and other provisions of part 3. Other provisions of part 3 में equality before law आएगा, उसका भी तो restriction है, for example, article 14. तो स्टेट को राइट था कि नहीं था लॉ बनाने में? तो स्टेट ने लॉ नहीं बनाया, इसलिए जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ा शाहबानो केस में। फिर तुम बोलोगे जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन अगर अपना काम नहीं करोगे तो जुडिशरी विल हैव टू गो फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म और नॉट। ये समझ में आया? तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, जैसे if you talk about Congress government, तो Congress government have also not done what was permissible in the Constitution for the protection of the right or the dignity of Muslim women. Have you understood this? So in one way they have gone for appeasement policies, ठीक है, at the cost of gender justice and appeasement of the orthodox section of the society. It's not that there is no liberal section which doesn't want the reform. ये समझ में प्रोविज़न था कि नहीं था, और ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है ही नहीं कोई राइट। तो
जुडिशरी अगर कर रही है या लेजिस्लेचर कर सकता है ना उसके बिना भी, तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है, कोई हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 25, ये तो किया होगा कल तुम लोगों ने, मैंने कहा था लिखने के लिए। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। नेक्स्ट, नथिंग लिखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating, restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. अब मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, आ सकता है ना। तो जबरदस्ती ऐसे सब डिबेट बनाया गया है, नहीं बना सकते, स्टेट तो बना ही सकती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ पे तुम्हें स्पेशल राइट्स दिख रहे हैं? स्पेशल राइट्स सिर्फ कहाँ है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल जो पहला वाला राइट है, ठीक है, उस वो तो सबके पास है ना, आर्टिकल 28, ठीक है, वो तो किसी भी सेक्शन हैज राइट टू कंजर्व इट्स लिटरेचर, कंजर्व इट्स लैंग्वेज, उससे कोई हार्म हो रहा है? दूसरा हार्म किससे हो रहा है, या दूसरा क्या है? माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, उसमें क्या हार्म हो रहा है? तो मत पढ़ो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। हाँ, हिंदूज के लिए नहीं है, वो अलग चीज है। दैट इज डिफरेंट। तो इन दोनों राइट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और तो ये जो सूडो सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन सूडो सेक्युलर है, इज दिस कंसेप्ट रॉन्ग और नॉट? ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा रिस्ट्रेन है ही नहीं। स्टेट कैन मेक द लॉ as if it is any practice, but state had not made law. That is also a fact. Is this clear? So now let us see like this uniform, these two provisions you have understood. So now let us see the emergence of the recent debate. Emergence of the recent debate on यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, राइट। द रीसेंट डिबेट गोज बैक टू शाह बानो केस, (1985), ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस शाह बानो केस? शाह बानो केस वाज आल्सो द केस ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक है।
and she was around 70-year-old lady, married for 40 years, 40 plus years, and her husband has given talaq, okay, and she wanted the maintenance, and as per the Muslim law, the maintenance is given only till the iddat period. After that, the maintenance is not the burden of husband. तो अब क्या है, वो कम्युनिटी का कस्टम है, इज दैट क्लियर? और क्रिटिसिज्म से पहले तुम्हें कम्युनिटी का कस्टम समझना पड़ेगा, फिर कस्टम और प्रैक्टिस में डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा. तो मुस्लिम कम्युनिटी में it becomes the responsibility of the family members of women, and if they are not capable, it becomes the responsibility of their waqf board, ki community as such, not husband's responsibility. Means if not this way, that way, the system of maintenance do exist. But factual चीज क्या है कि from waqf board the maintenance had not been actually given. वो भी एक fact है. That also needed that something has to be changed. But a custom is wrong is not there. You have to understand the custom because it becomes the responsibility. So she had applied for the maintenance as per Hindu woman, and the magistrate has ordered her husband to pay the maintenance like in case of Hindu woman. So that was fine, and her husband was also a lawyer, okay, and that time maintenance was just 250 rupees, 300 rupees under section 125 of CRPC, not more than that, but not ready to pay that much amount also, okay. So against the decision of the magistrate, ultimately appeal came to the Supreme Court. The Supreme Court has upheld the validity of the order of the magistrate. इतना सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक किया, और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने से एक एक्स्ट्रा काम और कर दिया कि भाई हमें बहुत अफसोस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लाया ही नहीं, लाना चाहिए, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू इंट्रोड्यूस uniform civil code. Court's intention was not communal or to make it a political issue. The court's intention was improvement of the situation of the woman. It was a genuine, but since then the BJP had made it a issue that it is like anti-national, okay, so they had politicized the issue. So this judgment was very much welcomed by the women organizations, Muslim women organizations, even the liberal and modernist section of the Muslims. But it got so much politicized. This judgment was opposed by All India Muslim Personal Law Board. Now Muslims are also not a single community. There are different communities, there are different traditions. So that is an organization of Sunni Muslims. Though they are in majority, but it is not the representative of the entire community. So now again political calculations, because BJP had projected it as a victory of their stand. Okay, so Congress was about to be marginalized, and Congress vote bank has been primarily Muslims.
So Congress, in order to appease the Muslims, brought a change in the law. Now this law is not very much against the interest of the woman, but in the political debates, we always forget what is exactly the system is. Is this clear? So this was Shah Bano case, so no need to write, but you can just write in Shah Bano case, right, Supreme Court had upheld the order of the magistrate which permitted Muslim women to receive maintenance at par with Hindu women under section 125 of CRPC, Criminal Procedure Code, CRPC. Is this clear? Section 125. Now you write response of the government. Right. एक और इसमें लिखो, राइट, Supreme Court also directed, Supreme Court also directed the introduction of Uniform Civil Code. ठीक है, अब लिखो response of the government. Muslim women protection of rights on Divorce Act, on Divorce Act 1986. अब इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रोविजन 1986, ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट सेक्शन 3(1)(a), मतलब इतना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट फैक्ट जानने की जरूरत है, ठीक है. What does it says? Section 3(1)(a), what does it says? Right, reasonable and fair provision and maintenance reasonable and fair provision and maintenance to be made to the woman within iddat period, within iddat period. What? इद्दत पीरियड होता है एक टाइप का सेपरेशन पीरियड जैसे होता है, टिल द फाइनल डिवोर्स. 3 months का ऐसे कुछ पीरियड होता है, इद्दत पीरियड, जिसमें यू विल हैव टू पे द मेंटेनेंस. ये समझ में? हाँ, क्या? तो वो 3 months का एक पीरियड होता है आफ्टर डाइवोर्स. 3 months का एक पीरियड है, तब तक ही देना होता है, ठीक है. अब इसमें 3 महीने को ही देना होता है, उसके बाद तुम्हारे फैमिली मेंबर या फिर वक्फ बोर्ड देता है. ये समझ में आया? अब यहाँ पे अंडरलाइन करो फेयर एंड रीजनेबल.
रीजनेबल एंड फेयर, तो ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस नहीं, रीजनेबल और फेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो 3 ही महीने में तुम 30 साल के पैसे मांग लो, तुम्हें फेयर तो लगना चाहिए ना। तो ये जो लॉ है इसको तुम घुमा सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखो इद्दत पीरियड को भी अंडरलाइन करो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ था या मैजिस्ट्रेट का लॉ था वो था थ्रू आउट लाइफ। अब इन्होंने उसको चेंज करके सिर्फ इद्दत पीरियड कर दिया, बट थ्रू आउट द लाइफ तुम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, तुम चाहो एक साथ भी तो ले सकते हो। तो ये पर्टिकुलर लॉ इज वर्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी सब्जेक्टेड टू 2 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। अब इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया गया इन डेनियल लतीफी केस, बट इसका फर्स्ट प्रोविजन ये